please, everybody. Hare
Premanandi Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paskajari Dadarine Joy Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaurabhaktavinda Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanda Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sridevi Kanamami Haripriye Vanchakalpataruvesya Kripa Sindhuvayevata Paritam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. I want to welcome you to this second part of our lecture on how to chant the holy name with taste. हम सबका स्वागत करते हैं इस लेक्चर के दूसरे भाग में जिसमें हम बताएंगे कैसे हम हरिनाम का जप रुचि के साथ कर सकते हैं। I would like Yes. We will just briefly read from the 11th chapter of the Gita, text 36. Arjuna Uvacha Stane Rishikesha Tava Prakritya Jagat Prarishyat Anurajate Cha Rakshangsi Vitani Dishodravanti Sarve Namasyanti Cha Sita Sangai. Arjuna said, he is praying to Krishna, O Master of the senses, the world becomes joyful upon hearing your name, and thus everyone becomes attached to you. Although the perfected beings offer you their respectful homage, the demons are afraid and they flee here and there. All this is rightly done. अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर
भयभीत हैं और इधर-उधर भाग रहे हैं, ये ठीक ही हुआ है। Yes, the devotees always appreciate Krishna, जो भक्त हैं वो हमेशा कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, and the demons always do not appreciate him. और जो असुर हैं वो कभी भी कृष्ण की प्रशंसा नहीं कर पाते। This is because the devotees see Krishna everywhere, whereas the demons cannot see Krishna anywhere. क्योंकि जो भक्त हैं वो कृष्ण को सब जगह देख सकते हैं, और जो असुर हैं वो कृष्ण को कहीं भी नहीं देख सकते। When Hiranyakashipu asked Prahlad, "Where is your God?" he said, "Everywhere, Father." जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि आप तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी हर जगह। But Hiranyakashipu didn't see him anywhere. लेकिन हिरण्यकश्यप भगवान को कहीं भी नहीं देख पाया। So he said, "Yes, this is nonsense. Is he there in this pillar?" तो हिरण्यकश्यप ने कहा, तो क्या वो इस खंबे में भी है? And Prahlad said, "Yes." And he saw the smile of the Lord coming from outside the pillar, inside the pillar. प्रहलाद महाराज ने कहा, निश्चित रूप से मैंने इस खानस्तान के भीतर से भगवान को मुस्कुराते हुए देखा है। So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, we are somewhere between Hiranyakashipu and Prahlad. भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि हमारी स्थिति हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बीच की स्थिति है। We don't see Krishna in many situations of our life. हम लोग जीवन की हर परिस्थिति में कृष्ण को नहीं देख पाते। But sometimes we see him in the deity form, or we feel him when we chant together with other devotees his holy name. लेकिन कई बार हम भगवान को उनके आज विग्रह के रूप में या जब सब भक्तों के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। So we are in between Hiranyakashipu and Prahlad. हम हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बीच में हैं। And in our spiritual life, our spiritual practice, we try to come to the side of Prahlad 100%. और हमारे आध्यात्मिक जीवन में और जो भी हम आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, हम ये प्रयास करते हैं कि हम प्रहलाद की तरफ 100% आ जाएं। For this, the chanting of the holy name is very, very important. और इसके लिए हरिनाम का जो जप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। This morning we spoke about the greatest problem in our chanting and how to overcome it. आज सुबह हमने इस बात पर चर्चा की, हमारे जप में कीर्तन में सबसे बड़ी समस्या क्या है और इसका क्या समाधान है। The greatest problem doing both japa and kirtan is that we become inattentive and distracted. सबसे बड़ी समस्या हमारे जप और कीर्तन में ये है कि हम ध्यानपूर्वक इसका जप नहीं कर सकते और हमारा ध्यान भटक जाता है। We heard that this inattention and rejection is only a symptom of our big inner disease, that we have turned away from Krishna. तो ये सावधानी से जप न करना और कृष्ण का तिरस्कार करना, ये वास्तव में जो हमारे अंदर की बहुत गहरी जो बीमारी है उसको दिखाता है। And even though someone starts to sing Krishna's holy name, if he is not really, let me say, serious, he will be absent-minded and he will continue to be absent-minded. अगर कोई कृष्ण का गान करता भी है लेकिन वो वास्तव में गंभीर नहीं है तो उसका मन उसमें नहीं लगेगा और हमेशा ही ऐसे ही रहेगा। So there are three solutions to this. उसके तीन समाधान हैं। This helps you to turn to Krishna, these three solutions, especially in his holy name. तो ये तीन समाधान का अगर हम पालन करेंगे तो हम कृष्ण के प्रति उन्मुख हो पाएंगे, विशेषकर उनके हरिनाम के। It starts with being open and frank about your situation, or in other words, humble and understand. Yes, I am a conditioned soul. I have a problem. In focusing on Krishna. तो सबसे पहला कदम यही है कि हम इसको स्वीकार करें, हमें भक्त जीव हो, मेरे साथ ये समस्या है
बिल्कुल विनम्र होकर और ईमानदारी से इस अपनी समस्या को स्वीकार करना कि मैं कृष्ण की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा। Then you go into the association of devotees and chant Sankirtan, that means together, like we have done this evening. और फिर हम दूसरा भक्तों के संग में जाते हैं और मिलकर संकीर्तन करते हैं, जैसे कि आज शाम को हमने किया। Jiva Goswami makes a difference between japa and kirtan, which is quite interesting for us. जीव गोस्वामी जी ने जप और कीर्तन में भेद बताया है, जो कि हम सबके लिए बहुत ही रुचिकर है। He says, between the two, japa and kirtan, kirtan is more effective. उन्होंने कहा जप और कीर्तन के बीच में जो कीर्तन है वो ज्यादा प्रभावशाली है। And he gives the following reason. और उन्होंने इसके ये कारण बताए। He says, for concentrated japa meditation, you already need a purified mind. तो जप को ध्यानपूर्वक एकाग्रता से करने के लिए आपको एक शुद्ध मन की आवश्यकता है। However, when you do kirtan in the association of devotees, your mind gets purified, even though it is not pure when you start. और लेकिन जब हम सब भक्तों के बीच में कीर्तन करते हैं तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है। जबकि प्रारंभ में जब हम कीर्तन शुरू करेंगे तो हो सकता है हमारा मन शुद्ध ना हो। So good japa can only be done by a pure soul, but kirtan can be done by anyone, even someone who is lazy, distracted, and full of bad desires, because the chanting will purify all these problems. तो सही जब तो केवल एक शुद्ध जीवात्मा कर सकते हैं, लेकिन कीर्तन में कोई भी भाग ले सकता है, चाहे उसमें सारे के सारे अवगुण क्यों ना हो, उसमें वो जब करने में आलस होता हो या उसका ध्यान इधर भटकता हो या कई प्रकार के उसके अंदर अनर्थ हो। And yesterday this morning, I'm sorry, we also quoted to you one interesting, let me say, tip how to improve your japa from the disciple of Guru Gopal Goswami. और आज सुबह हमने ये भी चर्चा की कि कैसे हम अपने जप में सुधार ला सकते हैं, और हमने गोपाल गुरु गोस्वामी जी के शिष्य के द्वारा जो एक वचन थे उसको कहा। Yes, when we chant the holy name, we should allow the holy name to enter through our ears, our heart. जब हम हरिनाम का जप और कीर्तन करें तो हमें हरिनाम को अपने कर्णों के माध्यम से अपने हृदय में प्रवेश करने देना चाहिए। And the holy name should pervade our consciousness entirely. और हम जो हरिनाम है वो पूरे हमारे चेतना में उसको पूरा अपनावित कर दें। And also he says we should in turn direct our mind to the core of the holy name, that's Radha and Krishna. और साथ में हमें अपने मन को हरिनाम में ले जाना चाहिए, राधा और कृष्ण की ओर। So if we are willing to do these three simple practices, then Krishna will certainly manifest in our heart. अगर हम केवल तीन सरल अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होंगे। I would like to tell you now, let me say, a traditional story on the chanting of the holy name, which will encourage you, and then I will give you 5 more guidelines how to bring your chanting to perfection. अब हम एक आपको ऐसी गाथा सुनाएंगे जिसको लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, और फिर मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे अपने जप में आप सिद्धि पा सकते हैं। This story, if you listen now to this story, please think a little bit, because it is a metaphor. That means it points to another reality. तो अगर ये कथा सुने तो कथा सुनते हुए थोड़ा इस पे विचार करें, क्योंकि ये जो कथा है एक दूसरे सत्य की ओर इंगित करती है। This metaphor describes the jiv, the living entity, who is by nature prakriti or female. इस कथा में जो किरदार आएगा वो एक प्रकृति, एक जीव के विषय में बताया जाएगा जो कि एक प्रकृति है। Yes, Shakti. Yes. So once there was a very poor girl
living in a dark forest. एक बारी एक बहुत ही निर्धन कन्या थी जो कि बहुत गहरे अंधकार में जंगल में रहती थी. She had heard about a prince, no, a king, who was very kind to his subjects. तो उन्होंने एक राजा के विषय में सुना था जो कि अपनी प्रजा के प्रति बहुत दयालु था. And in her mind she desired to go one day to the king and serve him. और उसके मन में, लड़की के मन में इच्छा थी कि एक दिन वो राजा के पास जाएगी और उसकी सेवा करेगी. This girl was all alone in the forest and did not know who his father or mother was. और ये जो लड़की थी पूरे जंगल में बिल्कुल अकेली थी. उसको ये भी नहीं मालूम था कि उसके पिता कौन है और माता कौन है. It lived in a very simple straw hut. और एक साधारण से तिनकों के उसमें झोपड़ी में रहती थी. And it had only one friend, और उसका केवल एक ही मित्र था. a little bird. और एक छोटा सा पक्षी. This pakshi was not, one day was flying away and not returning. और एक बार जो ये पक्षी था ये उड़ गया और वापस उसके पास नहीं आया. After 6 months, when the girl thought that the pakshi has died, the pakshi came back and said, I was at the king's palace. और 6 महीने के बाद वो पक्षी वापस आ गया और उसने कहा कि मैं तो राजा के दरबार में था. And one morning he said, he wants to see you. और उस राजा ने एक बार कहा कि वो आपसे मिलना चाहता है. But it is very far. लेकिन बहुत दूर है. There are 3 oceans and 9 rivers in between. और राजा और हमारे बीच में 3 महासागर हैं और 9 नदियां हैं. So that girl heard this, but she didn't think she would ever see the king. तो उस लड़की बेचारी ने सोचा कि उसके लिए तो कभी भी संभव नहीं होगा कि वो कभी राजा से मिल पाए. She was in this dark forest. वो तो इस अंधकार में जंगल में अकेली थी. Jungle mein, yes, jungle mein. So one day she heard a knock at her door, and when she opened, she saw a very opulently rich man. He looked like nobility. तो एक दिन अचानक उसने अपने झोपड़ी के दरवाजे पे खटखट सुनी और उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने बहुत ही ऐश्वर्यमान तरीके से सुसज्जित एक व्यक्ति खड़ा था. The man introduced himself as the messenger of the king who had come to bring the girl before the king. और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं राजा का दूत हूँ और मैं उस लड़के को आपको लेने आया हूँ राजा के पास ले जाने के लिए. She immediately gave up her house. और उस लड़की ने तुरंत अपना घर त्याग दिया. And she went with the messenger और वो उस दूत के साथ चली. on a long journey. बहुत लंबी यात्रा थी. They crossed the 9 rivers and the 3 oceans. 9 नदियों और 3 महासागरों के बाद. And finally they saw in the distance the palace of the kind king. और बहुत दूर से फिर उसने देखा उस दयालु राजा का महल. But the girl was sad कि जो लड़की थी वो बहुत उदास हो गई. because she had fallen in love with the messenger. क्योंकि वो जो उस दूत के साथ प्रेम में आ गई थी. She thought, who am I? The king sends for me. He wants to see me, and I, foolish girl, cannot control my emotions. And now I love someone else than the king. I love the messenger. तो लड़की को बहुत दुख हुआ. उस राजा ने मेरे लिए इस दूत को भेजा और मैं अपनी मूर्ख लड़की हूँ. मैं अपने मन को रोक नहीं पाई, अपने भावों को रोक नहीं पाई और मैं इस दूत के साथ प्रेम करने लग गई. And she confessed this to the messenger. और उसने ये अपने दिल की बात उस दूत को सुनाई. I'm a mook. मैं मूर्ख हूँ. Yes. What to do?
I'm like an ordinary person. I've forgotten about the king, and my heart is now with you. और एक साधारण व्यक्ति की तरह मैं राजा को भूल गई और मेरा हृदय मैंने अपना हृदय आपको दे दिया. The messenger shook his head like you do in India. And he smiled. He said, just come, let us go before the king. Everything will be clear in a few hours. And he brought the girl in the palace and had some very nice maidservants bathe and dress her. And he said goodbye to the girl. The girl was bewildered. The maidservants brought her into the audience hall, the hall where the king would receive everyone. And when she looked at the throne, tears came out of her eyes. Because she saw on the throne the messenger. It was the king himself who had come into the jungle and taken her and guided her to his palace. But in the beginning, but she thought the messenger is different from the king. In much the same way, my dear devotees, Krishna has come personally in the form of his holy name into our lives. And he has come to bring us on a long journey. And we crossed the samsara ocean with him. And finally he will bring us into the kingdom of God. And then we will see, oh, I'm a mukh. I did not see that the holy name himself is Krishna. Binatvang nama namino. The name is not different from the one who is named. So if you want to chant the holy name, go on a long journey with the holy name, there are 6 very interesting rules which are given by Sanatana Goswami in Hari Bhaktivilas. अगर हम हरिनाम के साथ एक लंबा सफर तय करना चाहते हैं तो सनातन गोस्वामी जी ने 6 नियम बताए हैं अपने ग्रंथ हरि भक्ति विलास में. Yes, we have written them down for you on the table, on the screen. हमने आप सामने स्क्रीन में देख सकते हैं कि 6 नियम लिखे हैं. The verse goes like this. Manasang haranang socham mananam mantra chintanam avyagratvang anirvedo japasam patihetava. Yes, very good. Thank you, Primanjana. This is easier. The first, if you want to write
in your notebook, this is a good time to take notes. The first principle is, while chanting, you should have a one-pointed concentration. तो पहला सिद्धांत है कि जप करते समय हमारा बिल्कुल एक बिंदु वाला एकाग्रचित्त होना चाहिए. That means give up your mundane topics when you chant and remember Krishna. इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम जप कर रहे हैं तो इधर-उधर की बातों को हम बिल्कुल छोड़ दें, कृष्ण के नाम पर ध्यान. When you chant, you should think, this is my time with Krishna. जब हम जप करें तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम कृष्ण के साथ समय बिता रहे हैं. My appointment. तो मेरा एक अपॉइंटमेंट है. And you should not have anything else in mind. इसके अलावा हमारे मन में और कुछ नहीं होना चाहिए. I would like to give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा. Imagine the Prime Minister, Mr. Modi, would invite you. उदाहरण के लिए सोचिए कि अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको आमंत्रण दिया है. During the time of the meeting, you would not answer your mobile phone. You would switch off the mobile phone. मोदी जी के साथ जो मीटिंग होगा उसमें आप अपने मोबाइल फोन पे बात नहीं करेंगे. आप मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देंगे. You would think, during this meeting, I want to be fully concentrated. I don't want to be distracted. और हम कहेंगे कि जो प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग है इसमें मैं आप किसी भी तरह से अपना ध्यान भटकने नहीं दूंगा. पूरा ध्यान इस मीटिंग पे दूंगा. So in the same way, when you chant, one-pointed concentration is necessary. इसी ढंग से जब हम जप करें पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होना अति आवश्यक है. The second principle, I have made too many offenses against the technology. It doesn't work. The second principle is socham. दूसरा सिद्धांत है शौचम. It is internal and external cleanliness. ये है आंतरिक और बाहरी शुद्धता. When you chant, it's good to have taken some shower first. जब हम जप शुरू करें तो अच्छा है कि हम पहले स्नान कर लें. But even more than external cleanliness, you can sometimes even chant before your shower. More important is internal cleanliness. लेकिन बाहरी शुद्धता से आंतरिक शुद्धता ज़्यादा महत्वपूर्ण है. कई बार हो सकता है हम स्नान से पहले भी जप कर लें. That means when during chanting some bad thought comes in your mind. तो अगर जप के समय समझ लीजिए कोई बुरा विचार हमारे मन में आता है. Like you may think, oh, I want to really throw a bomb in the house of my neighbor. I'm joking, you know. If some thought of hatred comes, or lust, or anger, you should say, no, internal cleanliness is now very important. हो सकता है जब करते समय हमारे मन में कुछ क्रोध आ जाए किसी के प्रति या किसी के प्रति द्वेष या काम वासनाएं आ जाए तो हमें ध्यान देना चाहिए कि आंतरिक शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है. The third principle for good chanting is mona or silence. और तीसरा सिद्धांत है अच्छे जप के लिए मौनम, पूर्ण रूप से शांत रहना. You know, my dear devotees, when you chant, don't talk with others. तो ये भक्तों पे ध्यान दीजिए कि जब हम जप करें तो किसी और से कोई बात ना करें. Or in general, be careful what you talk. और या फिर जब हम साधारण रूप से भी जब हम किसी से भी बात करें तो बहुत सावधान रहें. Because all these bad words which you talk, they come back to you during your chanting and they disturb you. क्योंकि जो भी हम किसी से अपशब्द बोलेंगे फिर अपशब्द वापस आएंगे जब हम जप करते हैं और हमारे मन को बहुत व्यथित करेंगे. During japa, do be silent, don't talk anything. और जप के समय बिल्कुल मौन रहिए, कुछ और बात मत कीजिए. And outside of your japa period, talk often about Krishna.
और जब होने के बाद जब हम बातचीत करें तो अक्सर हम कृष्ण के विषय में बात करें. I would like to give you the fourth principle. चौथा सिद्धांत है. It is mantrata chintanam. Think about the meaning of the mantra. वो है कि मंत्र के अर्थ के विषय में सोचें. This means when you chant, you think, oh Krishna, hey Bhagavan, please engage me in your service. और जब हम जप करें तो हम सोचें, ओ कृष्ण, हे भगवान, कृपया करके मुझे अपनी सेवा में लगाइए. And the fifth principle is avyagrata. Be peaceful and undisturbed in your mind. और जब हम पांचवा सिद्धांत है कि बहुत शांत रहे और ज्यादा विचलित ना हो. There was once a king. एक बार एक राजा था. I think he was in a place called, small kingdom called Vishnupur. वो एक छोटा सा राज्य था, विष्णुपुर उसका राजा था. And he demanded that every citizen, his name was Gopal Singh, he demanded that every citizen chant 64 rounds each single day. तो उसका नाम था गोपाल गोल. वो कहता था कि मेरा हर प्रजा को प्रतिदिन 64 माला का जप करना है. And he had secret police checking if the people in his kingdom completed their 64 rounds. और जिनसे पूरे राज्य में अपनी पुलिस को भेजता था चेक करने के लिए कि हर प्रजा ने अपने 64 माला का जप किया कि नहीं. Now imagine the situation of a farmer. तो अब आप सोचिए किसी किसान की स्थिति को. It's summer. गर्मी का मौसम है. He has to get up very early and water the plants because that must be done in the early morning. और जो किसान है उसको सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है और फिर पूरे के पूरे जो पौधे हैं फसल उस पे पानी देना पड़ता है. सुबह सुबह ही पानी देना पड़ता है. He could maybe chant 4.5 rounds. When after a long day of farming he returns home, he has to chant 1 moment 59.5 rounds. और फिर पूरे दिन में लंबी मेहनत करने के बाद जब वापस आता है तो उसको 59.5 माला का जप करना है. And he knows, maybe through the window looks the inspector of the king, if I'm completing my rounds and if I'm not sleeping. और उसको मालूम है, हो सकता है कि राजा का जो पुलिस वाला है जासूस वो देख रहा हो कि मैं सो रहा हूँ कि जप कर रहा हूँ. This poor farmer has no peaceful and undisturbed mind. He's highly unpeaceful. और जो एक किसान है ये अपने मन में शांत नहीं होगा, बेचारा बहुत ज्यादा विचलित अवस्था में होगा. So when you chant, my dear devotees, it's very important that this, we chant 16 rounds minimum, that you don't consider this a burden which makes you unpeaceful and disturbed. जब हम 16 माला का जप करें कम से कम तो बहुत ही शांति की स्थिति में करें और हम इस 16 माला के जप कोई बोझा लेके ना समझें जिससे कि हमारा मन विचलित हो जाए. Find good times when you can do it. अच्छा अपने लिए समय निकालिए जब आप इसको आराम से कर सकें. I know when Srila Prabhupada was a grihasta, he chanted 4 rounds before breakfast. श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे तो सुबह के नाश्ते से पहले 4 माला करते थे. 4 rounds for his lunch before his lunch prasadam. 4 माला वो अपने लंच प्रसाद से पहले करते थे. And 4 rounds before his evening prasadam. और 4 माला अपने सायंकाल के प्रसाद से पहले. That is 12 rounds, and then 4 extra rounds during the evening. और फिर 4 माला वो बीच में शाम को करते थे. So to be peaceful and undisturbed, you might have to also plan a little bit your day and your japa and your rounds. तो हमें पूरे ध्यान शांति में तरीके से जप करने के लिए हमें पूरी योजना बनानी पड़ेगी कि कब हमें जप करना है. And the sixth principle is called anirvida, to never become discouraged. और छठा सिद्धांत है कि कभी भी हतोत्साहित ना हो. When the result is not immediately coming and you are not immediately a pure devotee, don't become discouraged.
जब परिणाम तुरंत ना हो रहा हो और आपको लग रहा हो कि मैं बहुत जल्दी से शुद्ध भक्त नहीं बन रहा हूँ, तो आप हतोत्साहित ना हो। These are 6 first-class rules which will bring your chanting to perfection. तो ये जो 6 बड़े उत्तम कोटि के सिद्धांत हैं, जिसका पालन करके हम अपने जप को सिद्ध कर सकते हैं। After this lecture, we will ask Premanjana to display this, and then you can come close with your mobile telephones and make a photo, and then think about it in your practice. तो इस लेक्चर के बाद हम प्रेमानंद को से निवेदन करेंगे कि इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं और आप पास में आके अपने मोबाइल फोन से इसको फोटो खींच सकते हैं और बाद में इस पे मनन कर सकते हैं। But here I would like to only focus on one of these 6 principles. अभी मैं आप इन 6 सिद्धांतों में से केवल एक सिद्धांत पर चर्चा करना चाहता हूँ। Mana samharanam, it means bring your mind to the chanting. मैं कहूँगा कि मन समाधान पहला सिद्धांत था कि मन को इस जप पे लगाइए। Don't allow that your mind wanders around. अपने मन को ये आज्ञा मत दीजिए कि वो इधर-उधर घूमता रहे। Understand this chanting is your time with Krishna. ये समझिए कि ये जो जप कर रहे हैं ये हमारा कृष्ण के साथ समय बिताना है। Put everything on hold. बाकी सबको आप साइड में रख दीजिए। You can put all your you can make a long list of all the things which are in your mind. आप लोग अपने मन में तरह-तरह के विचार चल रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। And put it into a safe. और फिर इसको आराम से अंधेरा में डाल दीजिए। And lock the safe. और फिर इसको ताला लगा दीजिए। And then chant. और फिर जप कीजिए। Later, when you are finished, you can get the list out of the safe, if you still want. और फिर जब पूरा हो जाए तो फिर उस ताले को खोल के अगर आपको चाहिए वो लिस्ट तो लिस्ट निकाल सकते हैं। But most probably by that time you want to leave the list in the safe and not even look at it again. लेकिन अधिकांश ऐसा ही होगा कि जब के बाद आपको उस लिस्ट की आवश्यकता ही नहीं होगी। This is spiritual life. ये आध्यात्मिक जीवन है। You can meet Krishna. हम कृष्ण से मिल सकते हैं। When you come to the temple जब हम मंदिर में आते हैं and you sit before Radhika Raman, then what is the need of any other thing and project? You have arrived home. और जब हम मंदिर आते हैं और राधिका मंदिर के सामने बैठते हैं तो फिर संसार में किसी और प्रोजेक्ट की किसी और चीज की क्या आवश्यकता है? हम अपने घर में आ गए हैं। And then when you sit together with the devotees and sing, just sing for the pleasure of the Lord. और फिर जब भक्तों के साथ बैठते हैं और कीर्तन करते हैं तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हम And when your mind wanders away, don't go there. और फिर मन अगर इधर-उधर भटके तो मन को कहो इधर-उधर मत जा। Bring it back. इसको वापस लेके आओ। Yatha nischalati, says Krishna in the Gita. Wherever the mind wanders due to its restless nature, one should certainly bring it back under the control of the self. तो कृष्ण भगवद-गीता में कहते हैं कि जहाँ-जहाँ भी मन इधर-उधर भटके इसको तुरंत वापस लेकर आए। And you will see, when you do this, Krishna will help you in your life. और आप देखेंगे जब आप ऐसा करेंगे तो कृष्ण आपके जीवन में आपका सहयोग देंगे। If you give your worries away अगर अपनी सब चिंताओं को छोड़ दें and just focus on Krishna, Krishna will take care of you. और आप केवल कृष्ण पर ध्यान दें तो कृष्ण निश्चित रूप से आपका पूरा ध्यान रखेंगे। In Vrindavan there is one place. वृंदावन में एक स्थान है। It is called Pakshistan, the place of the birds. इसको कहते हैं पक्षी स्थान, पक्षियों का स्थान। I have one friend who lives in Vrindavan, and from his window he can see that each morning there are thousands of parrots are fed. तो महाराज कह रहे हैं उनका एक मित्र है वृंदावन में और वो खिड़की से देखते हैं एक स्थान में जहाँ पे कि हजारों तोतों को भोजन दिया जाता है। Some devotees put grains there, and then the parrots come and eat their breakfast. और कुछ जो भक्त हैं वहाँ पे कुछ अनाज डाल देते हैं
और तोते आते हैं और अपना वो नाश्ता करते हैं. This custom of feeding the birds of Vrindavan started, I believe, something like 200 years ago with one devotee called Krishna Das. तो ये जो रीत है सुबह सुबह ब्रज के पक्षियों को खिलाना, ये रीत शुरू हुई लगभग 200 वर्ष पूर्व एक भक्त के द्वारा जिसका नाम था कृष्ण दास. Krishna Das woke up every morning at around 1 o'clock. कृष्ण दास हर सुबह रात को 1 बजे उठ जाते थे. Then he chanted up till 1 o'clock in the noon time. और सुबह के 1 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक वो जप करते थे. And then he went on Madhukari, he baked his food, mostly 2 chapatis. और फिर वो मधुकरी निकलने के लिए जाते थे, भिक्षा में जहाँ से 2 चपाती ले लेते थे. And after eating his meal, he slept a little and then continued to chant again. और अपना भोजन करने के बाद थोड़ी देर विश्राम करते थे और फिर उठकर दोबारा से जप शुरू करते थे. This went on for many years and Krishnadas was very happy. और ये कई सालों तक ये चलता रहा और कृष्णदास बहुत प्रसन्न थे. One morning, it was before sunrise. एक बारी एक सुबह सूर्य उदय होने से पहले Radharani appeared personally before Krishnadas. राधा रानी स्वयं प्रकट हुई कृष्णदास के सामने. And she said, Krishnadas, listen, you are only taking care of your own life. But what is with my birds? They live also in my Vrindavan. राधा रानी ने कहा, तुम अभी तक केवल अपने ही जीवन का ध्यान रख रहे हो, लेकिन जो बाकी जो वृंदावन में जो मेरे पक्षी रहते हैं उनका ध्यान कौन रखेगा? From tomorrow onwards, I wish you to feed the birds of Vrindavan. और कल से मैं चाहती हूँ कि तुम वृंदावन के पक्षियों को भी भोजन कराओ. Do you know how many birds are in Vrindavan? क्या आप जानते हैं कि वृंदावन में कितने पक्षी हैं? Wow. It is as many as there are mosquitoes in Delhi. Maybe more. Maybe more. तो वृंदावन में उतने ही पक्षी हैं जितने कि दिल्ली में मच्छर हैं. हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो. So Krishnadas thought, but I need to chant. I have my program. कृष्णदास ने सोचा नहीं मुझे तो जप करना है, मेरा अपना प्रोग्राम है. I may be able to collect 2 more chapatis on my Madhukari, but with 2 chapatis, I can feed maybe 15 or at most 17 birds. तो कृष्णदास सोचने लगे कि ठीक है अभी मैं 2 चपाती भिक्षा में लेता हूँ, मैं 2 चपाती और ले लूँगा. तो इन 2 चपाती उसमें कितने पक्षियों को खिला पाऊँगा? So he said, 50 या 70. he said, my dear Radharani, I need to do my bhajan. How can I feed all the birds of Vrindavan? उन्होंने राधा रानी जी से कहा कि मेरे तो अपना जप करना है, तो मैं वृंदावन के सारे पक्षियों को कैसे खिला पाऊंगा? Radharani said, you will please me very much. Just try your best. राधा रानी कहा तुम मुझे बहुत प्रसन्न करोगे, आप अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करो. The next morning, it was around 9 o'clock when Krishnadas, and then Radharani disappeared. इसके बाद राधा रानी ये कहकर अप्रकट हो गई. The next morning when Krishnadas left his bhajan kutia, he saw on the wall of his bhajan kutia big bags full of very nice grains. और अगले दिन सुबह जब कृष्णदास बाहर निकले अपनी भजन कुटीर से, उन्होंने देखा कि इस भजन कुटीर की दीवार पर बहुत सुंदर बिल्कुल अच्छे गुनगुन के पूरे अनाज के बोरे रखे हुए थे. Big bags, बड़े-बड़े बैग, many bags.
बहुत ज़्यादा, full with good bird food. और बिल्कुल ये पक्षियों का अच्छा भोजन है उससे भरे हुए। So he thought Radharani has personally supplied the food for her birds. राधा रानी ने स्वयं अपने पक्षियों के लिए पूरा भोजन दिया। So he interrupted his bhajan and he threw the grains and 100 parrots came. तो उसने अपने भजन को विराम दिया और उन थैलों से अनाज को निकाल के फेंकना शुरू किया और सैकड़ों तोते वहाँ पे आ गए। The next morning when he came out at 9 o'clock, there were the 100 birds and all their friends, maybe 500 birds. और अगले दिन सुबह फिर 9 बजे उसने अपनी कुटीर से बाहर आए, फिर देखा कि 100 पक्षी थे और उसके साथ उनके और मित्र 500 और आ गए। And they have their internet. And their way of communication. And the third day, wow, so many pakshis were there. इसका पक्षियों का अपना तरीका था एक दूसरे को सूचना पहुंचाने का, और तीसरे दिन देखा तो और सारे पक्षी इकट्ठे हुए। Oh, so many! बहुत सारे। And he was soon, after a few weeks, finishing the big bags. और कुछ ही सप्ताह में उन्होंने जितना भी राधा रानी ने सारा का भोजन दिया था पक्षियों का सारा समाप्त कर दिया। Then, by that time, he thought, well, the Radharani sent again bullock carts with big bags of grains. तो फिर सोचने लगे राधा रानी दोबारा से भेजेंगे, अब तो उनको शायद बड़ी-बड़ी गाड़ियों में सारा भेजना पड़ेगा। It was not like this. लेकिन ऐसा हुआ नहीं। But people came, farmers came and gave him grains. लेकिन बहुत से किसान आए और किसानों ने अपना तरफ से भोजन दिया। They felt inspired in their hearts after they had heard about Krishna Das, who had received a personal order of Radharani. तो जितने भी किसान थे उनको जैसे प्रेरणा मिली और बहुत उत्साहित हो गए जानकर कि कृष्ण दास को स्वयं राधा रानी ने ये भोजन दिया पक्षियों को। I'm telling you this to draw a simile or some to draw a teaching from this. Shrimati Radharani was not pleased with Krishna Das when he only took care of himself with his 2 chapatis. श्रीमती राधा रानी कृष्णदास से तब प्रसन्न नहीं हुई थी जब वो केवल अपना ही ध्यान रखा था 2 चपाती से। But Shrimati Radharani became very pleased with Krishna Das when he distributed his benefit and shared with the birds of Vrindavan. श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई जब कृष्णदास ने इस भोजन को वृंदावन के सभी पक्षी। So, my dear devotees, Krishna is not satisfied, or Radharani is not satisfied, if you only nourish yourself with the chanting. तो मेरे प्रिय भक्तों, कृष्ण और राधा रानी संतुष्ट नहीं होंगे केवल आप अपने आप का ही अपना पोषण कर रहे हैं हरि नाम का जप कर। Please distribute the holy names. कृपया करके हरि नाम का वितरण भी कीजिए। Now the Christmas marathon is coming. Please take part in distributing Bhagavad-gitas in Delhi. Take part in organizing nice kirtan programs. Maybe in your homes. Why not? You can learn from Premanjana how to play beautiful melodies on the harmonium. And then distribute the holy name in your homes. Why not? Don't be selfish. Distribute the nectar. And Radharani will be very satisfied. It was a great pleasure for me to be with all of you. I wanted to explain the nectar of the holy name to you. And by telling you this amazing story of the messenger who was identical with the king.
I wanted to give you a few guidelines from Sanatana Goswami's Hare Bhakti Vilas, how you can bring your chanting to perfection. The most important is when you chant the holy name, think this is my time with Moody, no, with Krishna. सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब आप जप करें तो ये सोचिए कि मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कृष्ण के साथ. Yes, and then I wanted to encourage you to do something to distribute the holy name to others by telling you this wonderful story about Pakistan. और फिर मैं आपको बताना चाहता था कि आप हरि नाम की जप मत कीजिए और इसका वितरण भी कीजिए इस पक्षी इस कथा के द्वारा. Whenever I travel with Badri Vishal through the Himalayas, he has a big bag and he distributes to the villagers this and this Mahaprashadam, and he stops the car and gives this garland from Badri Vishal, and he distributes all this, and they know him as the devotee of Krishna who distributes the nectar. तो बद्री विशाल प्रभु हमारे साथ हमेशा अपने साथ एक थैला लेके चलते हैं जिसमें जगह जगह का प्रसाद होता है, भगवान की प्रसादी माला होती है और सबको जो भी नजर आता है उसको बांटते हैं. सब लोग बद्री विशाल प्रभु को जानते हैं कि कृष्ण के भक्त हैं और उनका प्रसाद वितरण करते रहते हैं. Each one of us should be like that pujari who distributes the charanamrita, huh? Spoon after spoon. हम सबको उस पुजारी की तरह होना चाहिए जो हमेशा चरणामृत बांटता रहता है एक चम्मच की बार. Have you seen the pujari? The chup, chup, chup. Let's distribute the nectar. That will be very pleasing to Guru and Krishna. जिस प्रकार से पुजारी चम्मच कर के सबको चरणामृत बांटता है, इसी प्रकार से हमें भी इस अमृत को बांटते रहना चाहिए जिससे कि गुरु और कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे. Yes. So thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. If you have some questions, this is a good time to ask now. Hare Krishna Maharaj Ji. You have very truly described our situation is between Vaishnavism and Allah. Hare Krishna Maharaj Ji. You have very truly described our positions like exactly between Vaishnavism and Allah. So my question is that one, how a sick person can concentrate on Krishna consciousness when his position, when his mind is not in his state of concentration of chanting Krishna's name, his mind is not in his control. Can you please advise us to give the answer of this question? Hare Krishna. Hare Krishna. So, yes. प्रभु जी का प्रश्न है, बोला महाराज जी आपने बताया कि हम सबकी स्थिति प्रहलाद और हिरण्यकशिपु के बीच में है, तो हम कैसे कृष्णा भावनामय हो सकते हैं जब हमारा मन ही हमारे नियंत्रण में नहीं है. See, when you have difficulties to control your mind, it is yes, it is not so easy to concentrate it on the holy name. It cannot be concentrated on anything. तो जब हमें बहुत परेशानियां हो रही हो अपने मन को नियंत्रित करने में, तो निश्चित रूप से बहुत कठिन होगा कि जब हम हरि नाम पे इसको केंद्रित कर सकें. At that time, you should go to the devotees when there is kirtan. उस समय हमें भक्तों के बीच में जाना चाहिए और कीर्तन सुनना चाहिए. And when the devotees chant kirtan, the kirtan will run after your mind and catch the mind. Like you know, you catch a wild horse with a rope.
तो जब हम भक्तों के साथ जाएंगे, भक्तों के बीच में जाएंगे, तो कीर्तन सुनेंगे, तो कीर्तन क्या करेगा, जो हमारे भागता हुआ मन है उसको पकड़ लेगा और वापस लाएगा, जैसे कि एक जंगली घोड़े को रस्सी से काबू किया जाता है। Sit for some time in the kirtan. उस समय के लिए कीर्तन में बैठिए। 1 hour, 2 hours, 3 hours. 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। And after some time, your mind will become peaceful. तो कुछ ही देर के बाद आपका मन शांत हो जाएगा। Also in your home, you can make one recording that there is always kirtan going on. और अपने घर में भी हम कुछ से रिकॉर्डिंग चला सकते हैं जिसमें हमेशा कीर्तन चल रहा हो। And slowly your mind will be infiltrated. निश्चित रूप से क्रमशः क्या होगा कि हमारे मन के अंदर वो हरि नाम प्रवेश कर जाएगा। You may not be able to control your mind, but Krishna can. हम हमारे में योग्यता नहीं है कि हम मन को नियंत्रित कर सकें, लेकिन कृष्ण निश्चित रूप से कर सकते हैं। That's why in this age of Kali, kirtan or singing and sankirtan, singing with many, is very nice. इसलिए कलयुग में ये संकीर्तन सबके साथ मिलकर कीर्तन करना उसकी विधि को बताया हुआ है। This morning I was chanting my japa on the veranda, and here in the temple there's a very nice sweet kirtan going on. इस सुबह, आज की सुबह मैं वेरांडा में जप कर रहा था और मंदिर के हॉल में बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा था। It must have been between 11 and 12:30, something like this. 11 और लगभग 12:30 के बीच की बात है। So I was thinking, when I'm finished with my rounds, I will join the kirtan and sit there before the deities. तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं अपना जप फिनिश करूं और फिर मैं विग्रह के सामने बैठ के कीर्तन में भाग लूं। So in the same way, you can also come when there is nice kirtan going on. Maybe not such loud kirtan, but when there's nice peaceful kirtan. तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब मंदिर में बहुत ही अच्छे ढंग से कीर्तन चल रहा हो, ऐसा नहीं कि बहुत ही जोर वाला कीर्तन हो तभी भाग लेना है, तो फिर उसमें आप भाग ले सकते हैं। And you will see how Krishna catches your mind. और फिर आप देखेंगे कैसे कृष्ण हमारे मन को पकड़ लेते हैं। उसमें 8 भगवान के भेद प्रकृति वो है और 9 है जो चित्त। Yes, mean collective consciousness. जो हमारा सामूहिक चेतना है। So, why do you laugh? You are very joyful. Why are you very Hare Krishna Maharaj, thank you very much for such a wonderful lecture. Maharaj, my question is, as you mentioned in the lecture, that Jiva Goswami differentiated between Kirtan and Japa. In Kirtan, anybody can take part, and he can be purified. But for Japa, we need a purified mind. Yeah. So why our Acharyas have not given stress on Kirtan? Why 16 rounds of Japa? We are conditioned soul. We don't have purified mind. But in Kirtan we can sit for long hours, as devotees do in Mayapur Kirtan Mela. So why not daily Sankirtan sort of practice? Why this? Yeah. 16 rounds is nothing. First ये है कि महाराज आपने बताया जीव गोस्वामी जी ने Lord Chaitanya gave the standard 64 rounds for each devotee, and Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada repeated that standard. प्रश्न ये था कि जीव गोस्वामी जी ने कहा कि कीर्तन और जप के अंतर ये है कि जप करने के लिए शुद्ध मन चाहिए, वो कीर्तन में कोई भी भाग ले सकता है। फिर हमारे आचार्यों ने हमें जप पे इतना जोर क्यों दिया, क्यों हम प्रतिदिन 16 माला का जप करें जब हमारा मन शुद्धि नहीं है, हम सब जीव हैं। तो नहीं प्रतिदिन संकीर्तन की साधना बताई गई है। महाराज कह रहे हैं कि 16 माला तो कुछ भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि प्रत्येक मनुष्य को कम से कम 64 माला का जप करना चाहिए, और भक्तिवेदांता स्वामी ठाकुर महाराज ने भी इसी बात पे जोर दिया। And Srila, yes, and
But Srila Prabhupada said, because we are so chanchal, our mind is so chanchal, therefore he has reduced the 64 number to 60. श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि हम लोगों का मन इतना चंचल है इसलिए उन्हें 64 माला के नंबर को 16 कर दिया. And the rest of the day only chanting kirtan. Yeah, not maybe with everyone together, but singing. Yeah. No, yes. Hare Krishna. प्रतिदिन हो सकता है आप सबके साथ ना कर पाए तो अकेले कीर्तन करते रहिए. You may say, Maharaj, we have to work. लेकिन आप कहेंगे महाराज जी हमें तो काम धंधा करना है. We have family. हमारा परिवार है. And we have also some interests. Maharaji, be practical. Don't be impractical. The 16 rounds will help you to do better kirtan. 16 माला का जो जप है वो हमें अच्छा कीर्तन करने में सहयोग देगा. It's a minimum. ये कम से कम है. You should sing during the day as much as possible. दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा गायन करें. While you do your other work, chant the holy name, because everything else will be taken away from you at the time of death. जब हम दूसरे काम कर रहे हो तो साथ-साथ कीर्तन करें क्योंकि मृत्यु के समय बाकी सब तो हमसे हट लिया जाएगा. Yes, I have, where I live, I have one telephone, and on the telephone receiver, you know, it's like it rings and then you go like this. Old telephone. I have sticked on the telephone a message. Sachinandan Swami, while you do your other work, always chant the holy name. Everything else will be taken away from you at the time of death. And when it rings, I see that message because I pick up the receiver. बता रहे हैं अपना अनुभव कि महाराज के पास एक फोन है पुराने ढंकर और उस फोन पे महाराज ने एक स्टिकर लगा दिया है और जब भी घंटी बजती है महाराज रिसीवर उठाते हैं तो स्टिकर में लिखा हुआ है सच्चिदानंद स्वामी जी आप जब भी कोई भी काम करें तो साथ साथ हरि नाम का कीर्तन करें क्योंकि मृत्यु के समय बाकी सब तो हट लिया जाएगा. Yes. So while 16 rounds may appear to be a big number for some of us, it is something which with good planning can be easily done during the day. हो सकता है कि हम से कुछ लोगों के लिए 16 का नंबर एक बहुत बड़ा लग रहा हो लेकिन हम अच्छी ढंग से अगर योजना बनाएंगे तो इसको किया जा सकता है. And the rest of the time sing, either together with many, this is not always possible, or sing alone. तो बाकी जब दिन के समय बचे तो उसमें हम कीर्तन करें हो सके तो कई भक्तों के साथ नहीं तो अकेले. I think if you study these instructions, my dear devotees, you will understand, my God, Krishna consciousness is a serious thing. अगर आप ये सब ये 6 जो सिद्धांत बताए गए हैं इसको आप अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि कृष्ण भावनामय होना एक बहुत ही गंभीर कार्य है. Yeah, it's a complete life. ये पूरा अपना जीवन है. It's not some cheap thing like a little yoga course, you know. 20 minutes and your belly will become attractive. You will have the Shakti belly, you know. No, it's a complete life. Krishna. My dear devotees, I have to go tomorrow. महाराज कह रहे हैं कि मुझे कल सुबह निकलना है.
And with your permission, I think it's good if we stop now. It's already 9:20. And you have not eaten your dinner. So we will stop here. But we will just sing one little bhajan, 2 minutes. Hare Krishna, Hare Krishna.